Hello everyone, welcome to my channel C.S.E-Pathshala. We were studying about machine learning using Python 3, and in this tutorial we will study about matrix and cumulative sum in NumPy. So if you talk about NumPy, it provides another class apart from the arrays, that is ND array, and it's called as a matrix. Okay, तो अभी तक जो है हमने पढ़ा है NumPy array के बारे में, और इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में, जो कि है एक सब क्लास एनडी अरे की ही। ओके, और इट इज आइडेंटिकल टू द एनडी अरे, लेकिन एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ये है कि हमने देखा था कि जो एनडी अरे होता है वो एन डायमेंशनल अरे होता है, होमोजीनियस फॉर्म का होता है, लेकिन जो मैट्रिक्स है ये स्ट्रिक्टली 2 डायमेंशन की होती है। ओके, सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एनडी अरे एंड अ matrix. However, matrix is a subclass of ND array itself. Okay, तो NumPy के अंदर यदि हमें मैट्रिक्स बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं? So let's consider a code here. We will implement this code on Jupyter Notebook. So here it is. Import NumPy as NP. A equal to np dot matrix, and here we are giving the elements. Okay. तो जब हमें अरे क्रिएट करना था नमपाई अरे, तो वी आर यूजिंग np डॉट अरे, बट इफ वी नीड टू क्रिएट अ मैट्रिक्स इन नमपाई वी विल यूज मैट्रिक्स. ओके, सो इक्वल टू np डॉट मैट्रिक्स, here are the elements. B equal to np dot matrix, here are again the elements. Okay, and straightforward we are printing these matrix. Okay, so save this code, run this code. So here it is. सो यहाँ हमने जो है 2D मैट्रिक्स क्रिएट करी है. तो बेसिकली जैसा कि हमने डेफिनेशन में बोला था, यहाँ जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2 डायमेंशन होगी. ओके, एंड दैट इज कंसिडर्ड टू बी स्ट्रिक्टली 2 डायमेंशंस. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, यदि आपको एक नमपाई अरे है गिवन, उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? वी विल यूज अ फंक्शन एज मैट्रिक्स. ओके, सो लेट्स कंसिडर अ कोड हियर, and we will convert this into a matrix from an array. Okay, so here it is. Import numpy as np, a equal to np dot array. तो यहाँ पर हमने एक array लिया है. Again these are the elements of the array. B equal to np dot array, these are the elements of the array. C equal to, that means एक और वेरिएबल हमने लिया है जिसमें हम क्या करने वाले हैं, ये जो गिवन अरे है उसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू स्टोर करेंगे. तो C इक्वल टू np डॉट एस मैट्रिक्स A, D इक्वल टू np डॉट एस मैट्रिक्स B. ऑलराइट, एंड वी आर प्रिंटिंग द मैट्रिसेस. ओके, सो लेट्स सेव दिस थिंग, रन दिस थिंग. सो हियर इट इज. तो आपका जो अरे है वो 2D मैट्रिक्स के अंदर क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है. ओके, तो जब आपको कन्वर्जन भी करना है, यू नीड टू चेक केयरफुली फॉर द डायमेंशंस कि ये जो है कंपेटेबल है कि नहीं 2D मैट्रिक्स में कन्वर्ट होने के लिए. यदि ये कंपेटेबल नहीं होगा तो ऑब्वियसली यू विल गेट एन एरर. ओके, सो ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर. एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एनडी अरे और मैट्रिक्स के बीच में. व्हेन वी परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन, एक तो डिफरेंस हमने ऑलरेडी नोट करा. द अनदर डिफरेंस इज व्हेन वी परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन, तो एनडी अरे का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एलिमेंट बाय एलिमेंट होता है. ओके, लेकिन यदि हम बात करें दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, तो वी वेरी वेल नो कि वहाँ जो है हम डॉट प्रोडक्ट जो है अप्लाई करते हैं, दैट इज इक्वल टू एनपी डॉट डॉट फंक्शन. ओके, इसके वो इक्वलेंट होता है. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मल्टीप्लिकेशन. सो इट्स बेटर टू कंसिडर अ कोड हियर. ओके, so let's check out this code. Alright, import numpy as np, x1 equal to np dot array. So we are considering an array here, x1 is an array, y1 is equal to np dot array, and these are the elements. So x1 and y1 are the array. Okay, now we are printing the product of x1 and y1, and here we will get element by element multiplication. That is, we are printing x1 into y1. Okay, and the next we are considering x2 y2, where x2 equal to np dot matrix, these are the elements, y2 equal to np dot matrix, and these are the elements, and we are performing the product of x2 and y2.
Okay, so here it is print x2 star y2. okay, तो जो पहला वाला केस उसमें एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन होना है, दूसरा वाला केस में जो हम डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहे हैं जो यूजुअल एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है. सो लेट्स सेव दिस कोड, रन दिस कोड. सो हियर इट इज द प्रोडक्ट ऑफ x1 and y1 is, so if you talk about the product तो एलिमेंट बाय एलिमेंट कैसे होगा, 1 into 7 is 7, 2 into 8 is 16, 4 into 2 is 8 and 5 into 3 is 15. तो उसी तरीके से रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं यहाँ पर. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यदि यहाँ पर बात करें तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जानते हैं कि ये जो ऊपर वाली मैट्रिक्स है दैट इज 2 क्रॉस 2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. नीचे वाली जो मैट्रिक्स अगेन 2 क्रॉस 2. ओके, सो अब यहाँ हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरीके से करेंगे. विल कंसिडर दिस रो दैट इज 1 2, ये रो को कंसिडर करेंगे और विल जस्ट कंसिडर द कॉलम. ओके, दैट इज 7 and 2 ऑफ द नेक्स्ट मैट्रिक्स, जो कॉलम होगा उसका पहला जो कॉलम होगा. तो 1 into 7 is 7, 2 into 2 is 4 and we will add क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं. तो 7 plus 4 is 11, so your first element is 11. Now the next thing is again 1 into 8 is 8, 2 into 3 is 6, so 6 plus 8 is 14, so your next element is 14. इसी तरीके से 38 and 47 भी आएगा. ओके, तो ये डिफरेंस है आप यदि मल्टीप्लिकेशन लेकर छोड़ते हैं अरे और मैट्रिक्स के बीच में. ऑलराइट, सो very often we deal with the numerical data obviously and there is a need to calculate cumulative sum of the numbers in a NumPy array. तो यदि ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें cumulative sum निकालना है, so there is a function that is called as cumsum. okay, that means cumulative sum. तो हम इसका यूज कर सकते हैं, उसके बिहाफ में हम जो है फंक्शन आपका cumulative sum जो है वो निकाल देगा आपके सामने. वट एवर द अरे एलिमेंट्स आर उसके जो है इट विल कैलकुलेट द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूमुलेटिव सम. सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, लेट्स चेक. लेट्स कंसिडर अ कोड हियर एंड वी विल implement it here. okay, import numpy as np a equal to np dot array. so here we are having with the array elements and here we are printing its value and then we are calculating the cumulative sum of all the elements in the array. तो जो cumulative sum होगा that will be we'll just save this thing and run this thing. तो वो हर एक एलिमेंट का एक एडिशन होगा. ओके, सो लेट्स रन दिस कोड. ऑलराइट, तो ये जो अरे है वो हमने कंसिडर करा था एंड हियर इट्स वैल्यू. तो ए की जो वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार से है एज वी हैव गिवन द इनपुट हियर. Then we have calculated the cumulative sum by a dot cumsum. Okay, तो वो कैसे निकलेगा? Here 1 is the first element. Okay, the next element is 2. So 1 plus 2 is 3. Okay, then 3 plus 3 is 6. 6 plus 4 is 10. Plus 5 15. Plus 6 21. Plus 7 28. Plus 8 is 36 and plus 9 is 45. तो जब हम क्या कर रहे हैं एक एक करके वट एवर द रिजल्ट वी आर गेटिंग वी आर एडिंग इट टू विद द नेक्स्ट एलिमेंट. तो ये आपका जो है क्यूमुलेटिव सम आया है. ऑलराइट, लेट्स प्रोसीड फर्दर. एंड इफ इन एनी केस द क्यूमुलेटिव सम रिटर्न्स रैंक 1 अरे, ऑब्वियसली जो कि हमने देखा था यहाँ पर इट्स रैंक 1 अरे. ये जो है रिजल्ट आपको दे रहा है क्यूमुलेटिव सम. एंड here we are calculating the sum of all the elements in the array. obviously जो लास्ट एलिमेंट है वो यही बता रहा है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका सम कितना आने वाला है. सो इट्स 45. ओके, एंड यदि आपको क्यूमुलेटिव सम जो है फंक्शन उसमें एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट भी होती है जिसको हम एक्सेस से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इफ यू गिव एक्सेस एज एन आर्ग्यूमेंट और एक्सेस की वैल्यू यदि हम 0 से इंडिकेट करते हैं तो ये बताता है यू नीड टू कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव सम ऑफ ईच कॉलम. हर एक कॉलम का क्यूमुलेटिव सम निकालना है आपको. तो वो कैसे करते हैं, लेट्स कंसिडर अ कोड हियर. ओके, सो आई एम जस्ट कंसिडरिंग दिस कोड and we will implement it here on Jupyter Notebook. And here the argument which we will give in the cumulative sum is axis is equal to 0. Okay, so here it is. Import NumPy as np a equal to np dot array. So here are the array elements and we will print
the value of array A, तो यहाँ हम print करा देंगे, print it. Then we will calculate the cumulative sum of all the elements in each column of the array, and that is done with the help of A dot cumulative sum axis equal to 0. ये ध्यान देने वाली बात है, axis equal to 0 करेंगे, then we can calculate the sum of the columns. Okay, so let's save this code, run this code. So here it is. Okay, तो ये आपका जो है array है. Okay, this is the original array, and when we are calculating the cumulative sum about the column, तो 1 2 3 ये आपका ऊपर वाली रो है. ओके, नीचे वाली जो रो में 4 5 6 है, तो जैसे हमें कॉलम्स का सम लेना है, तो 1 + 4 is 5, so this is 5. 2 + 5 is 7, so this is 7. 3 + 6 is 9, so this is 9. ओके, देन यहाँ 7 है, तो 5 आपको मिल गया था. 5 + 7 is 12. 7 + 8 is 15, and 9 + 9 is 18. तो हमने क्या करा है, पूरे जो कॉलम्स है उनका सम ले लिया है. देयर इज वन मोर कंडीशन. यदि आप एक्सेस को 1 ले लेते हैं, तो वी विल कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव सम ऑफ ईच रो. ओके, सो अब ये कैसे कर सकते हैं, जस्ट चेंज फ्रॉम 0 to 1 द वैल्यू ऑफ एक्सेस. ओके, सो हियर इट इज. विल इम्प्लीमेंट दिस कोड. Import NumPy as NP. Again we are taking the same array, okay, and we are printing the value of the array. Okay, and here in the cumulative sum we are calculating the sum of all the elements in each row, and it can be done as a dot cum sum axis equal to 1. Okay, and nothing, just save this code, run this code. So here it is. ये आपका original array है, और जो भी आपके रो के elements हैं, सो रो के एलिमेंट से फर्स्ट ये 1 है, 1 के बाद आ रहा है 2, तो 1 + 2 इट शुड बी 3. 3 + 3 6. ओके, तो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का सम हो गया. हियर इट इज 4. ओके, देन द नेक्स्ट इज 5, तो 4 + 5 is 9, so here it is 9. 9 + 6 is 15, so here it is 15. Similarly this is 7. ओके, यही रहा. 7 + 8 is 15, and 15 + 9 is 24. ओके, तो इस तरीके से जो है हम क्यूमुलेटिव सम निकाल सकते हैं. Alright, so this is all for this tutorial about matrix and cumulative sum in NumPy. So thanks for watching. Kindly subscribe to my channel.